Ashok Swain. He's, I would like to call him a dear friend, or he's helped us out. जब मैं TRT में था उस वक्त भी बड़ी बड़ी मदद की. ये उपसाला में होते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ उपसाला में, ये स्वीडन में मौजूद हैं. And without any further ado or delay, Professor Ashok Swain, thank you so much. आपने में ज्वाइन किया. पहले तो यानी स्वीडन में क्या हो रहा है आजकल? ये कुरान बर्निंग का इंसिडेंट वहाँ पे बहुत रिकरिंग है. तो व्हाट इज गोइंग ऑन? आप उधर मौजूद हैं, हमें बताएं कि ये चीज इसकी स्टेट सैंक्शन है या कोर्ट ने अपेरेंटली परमिशन दी इस चीज की? क्या रहा है ये? देखिए स्वीडन में जो चल रहा है, थैंक यू फॉर हैविंग मी अली, इट्स नाइस टू बी एंड देन टू बी ऑन योर शो. And obviously, let me tell my viewers that Professor Ashok Swain doesn't agree to just give interviews like that. He's quite a hard person to get a hold of, and I really appreciate कि ये आज हमारे शो के ऊपर मौजूद हैं. But continue, Professor Swain. थैंक यू. द स्वीडन में देखिए, स्वीडन में जो चल रहा है वो नया नहीं है. ये तो आजकल जो हुआ है वो जैसे हुआ है पहले भी हो चुका है. एंड कुछ दिन से चल रहा है. जैसे जो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ कोई बनाता है प्रोफेट का कार्टून बनाता है, कोई आजकल कुछ कुरान बर्निंग में चले हुए हैं. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंस, आई थिंक यू नीड टू रियलाइज कि स्वीडन में जो राइट विंग और फार राइट पार्टीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है. जब मैं आया, मैं तो 30-32 साल से यहाँ पे हूँ, तब कोई नाम निशान उनका नहीं था. आजकल 20-20% वोट है, और 20-20% वोट मीन्स दे आर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी. ये फार राइट की बात करें कि नाटसी हैं, कौन है ये लोग? ये वर्चुअली नाजी बैकग्राउंड है. पहले तो जो स्टार्ट हुआ था 92 में, जब पहले थोड़ा स्टार्ट हुआ था, वो नाजी बैकग्राउंड है. दे ट्राइंग टू, बिकॉज ये स्वीडन है, दे कैन नॉट रियली एक्ट लाइक वेरी मच लाइक नाजी, बट देर the neo-Nazi forces are most major part of it. They try to have a makeover, or try to see that look, they are they try to act a bit that their progress or the little modern party, but they are the same breed or same creed anyway. और उनके साथ कोई गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहता था, अभी भी गवर्नमेंट में नहीं है, but on their support the present government is running. So we need to realize that. Oh, so these guys are in parliament, or your present government को support कर रहे हैं? Yes, of course. Without their support, the present government cannot be present government. It cannot. Wow. So, and they are the second largest party. The first largest party is opposition. Okay, so the second largest party is not in power, but is supporting a coalition which is relayed by a third largest party. So you can imagine the situation. Or another coalition it is supporting, but they are actually in a sense they're changing a number of things, like our discourses. कल में मैं न्यूज़पेपर में आया था, मैं भी कि आई क्रिटिसाइज्ड वो क्या डेवलपमेंट रिसर्च स्वीडन का वो इमीडिएटली बंद कर दिए. Hundreds of researchers have applied for a fund which I used to even, जो वहाँ पे मैं चेयर था वो सिलेक्शन कमेटी में 7 साल. मुझे पता है कि क्या कितना डेवलपमेंट, स्वीडन का डेवलपमेंट रिसर्च के लिए जो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर रिसर्च करते हैं हम, तो वो पूरा बंद कर दिए. एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव अप्लाइड, overnight it got closed. So ये ऐसे टाइप का डिसीजन हो रहा है. And this is the same thing which is happening because of course this is the overall idea. I mean, I'm the overall picture here. But saying that, the government is not interested in doing this. Government doesn't, because government is also interested that the Sweden joins NATO, और Sweden NATO join करने के लिए टर्की का सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और उनके लिए ये मुश्किल करता है. तो ये बात कि गवर्नमेंट नहीं चाहना चाहता है. और टर्की ने तो इनको वो भी कंडेम भी किया. टर्की ने कहा इज कॉलिंग इट अ हेनस एक्ट कि भाई ये इज अनएक्सेप्टेबल. टर्की अभी नहीं किया है, टर्की पहले से ही करता है. टर्की क्योंकि कोई पहला कुरान नहीं है जो यहाँ पे बर्न हुआ है बेसिकली. एग्जैक्टली. तो ये गवर्नमेंट की बात नहीं है कि आई मीन टू बी फेयर, इट्स नॉट द गवर्नमेंट, it's not any political party other than the support sometimes, I mean or not open support, but there is sometimes also open support by this far right party. So that's the only thing which we, saying that, I think what happens, the Swedish rules are quite
Sweden is the first country to provide a rule of freedom of speech and expression from 18th century, the first country in the world. And we are, But there are oh limits yeah, to that of as well, course, right? no, that is, अगर ये तोरा अगर ये तालमुद या तोरा को जला रहे होते तो फिर इनके लिए तो डायरेक्टली जेल थी. no, that there are limits. I totally agree with that. That's not the thing. I'm just saying that the kind of things which they should put a limit. That's not. I'm not saying that they should not put the limit. The one thing which is that unless it is an official decision to take that kind of, that is a security threat. Okay, so if it's a security threat, then they can take this decision. They have stopped also few times also before those kind of things. So it has to be a combined effort of the police forces, judiciary, that the police forces will report that it is a security threat. Then the judiciary has to take a call, because somebody has to go to then because the people can go to the court. So it's a bit more complicated than जो बाहर जो दिखता है कि लोग सोचते हैं कि ये the Sweden में जो the situation is that the either Sweden's regime or the Swedish state is anti-Muslim or anti-core. Of course, there is a, but saying that there is I told you from the beginning, there is a growing force in the political Far right, of which course. are right going on. So it's a very complicated matter. क्योंकि इसका ताल्लुक भी refugees reaching Sweden है ना, यानी Syrians, Afghans, Pakistanis, whoever, Bengalis getting their finally making their way to Sweden. Absolutely. तो ये इस्लामोफोबिया उसी की तरफ से आ रहा है basically. Absolutely. Isn't that right? Absolutely. This is what I mean. This is what has been going on for some time. But that there is also the kind of in Sweden there is a there is a book which somebody wrote in 2000 almost 23 years back, saying that even in Sweden, means because they brought people from the different parts of the world, they kept it in a kind of particular areas in a certain cities, and they usually get social security, but they don't get possibility to integrate economically. Okay, so आपको job नहीं मिलेगा, आपको job market में आपका possibilities नहीं है, so then becomes, it's a lot of mismanagement is there, a lot of things, ways that they have not been proper way, they have not been integrated into society. So integration problem is huge, but those are the problems we all know and we all accept. I mean, this is supposed nobody can deny. But what I'm saying, what is happening, these kind of this stray incident of this Quran burning or insulting to Prophet, is some antisocial elements are taking the benefit, जो गवर्नमेंट जो जो उनका जो रूल्स रेगुलेशंस में जो ये है, जो whatever there are kind of things which they are taking the advantage of it. So and but the thing अपने व्यूअर्स के but लिए the thing अपना अब एक अगर अपने व्यूअर्स के लिए जो भी हमें देख रहे हैं इसके ऊपर जस्ट टू गिव प्रोफेसर अशोक अ ब्रेक एज वेल, बात करने से, क्योंकि उनकी बात वो जो बात करना चाह रहे हैं, बात कह रहे हैं कि ये फिनोमिनन जो है फार राइट का, फार राइट पॉलिटिक्स का, ये ना सिर्फ स्वीडन में बल्कि पूरे यूरोप के अंदर एक तरीके से सीप हो चुका है। और अब 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं। एक ये जो ट्रॉला निकला था मिस्र और लिबिया के बाद मेडिटेरेनियन के अंदर, और फिर ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनान ये डूब गया, और इसके अंदर तकरीबन कह रहे हैं कि 700 के लगभग लोग मारे गए, जिसके अंदर से 200 से ज़ायद पाकिस्तानी थे। yeah, और उसके बाद उसका जो बैकलैश आया, यानी ऑल ऑफ दिस इज टाइड इन। अगर स्वीडन में कुरान बर्निंग हो रही है या वहां पे फार राइट ग्रुप से इस्लामोफोबिया फैल रहा है, उसका ताल्लुक यानी पूरी चेन चलती है। हाँ, और ये चीज मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर अशोक भी बात करेंगे, मगर इससे पहले अपना फ्रेंच पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंटेरियन ने मोमेंट ऑफ साइलेंस कॉल किया इसके ऊपर कि जी जो लोग मरे हैंगे मेडिटेरेनियन के अंदर, उनके लिए एक मोमेंट ऑफ साइलेंस होना चाहिए। तो वहाँ पे जो कन्वीनर थे या और पार्लियामेंटेरियंस ने उन्होंने इनकार कर दिया उस मोमेंट ऑफ साइलेंस से। प्रोफेसर अशोक सोएन, तो ये सिर्फ चीज स्वीडन में नहीं हो रही, ये नफरत जो फैल रही है, ये पूरे यूरोप के अंदर फैल रही है। इसके ऊपर भी एक यानी ब्रीफली जल्दी, मुझे पता है आप अपना हम हमारा शो था मोदी इन इंडिया के ऊपर, मगर ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है सर। प्लीज गो अहेड। मैं एक्चुअली ये जो मैं यूजुअली जो वीकली कॉलम लिखता हूँ गल्फ न्यूज में, इस हफ्ते में वो इसी के ऊपर लिखा हूँ।
कि कैसे यूरोप फेल्ड इन इट्स ड्यूटी। जो यूरोप सबको सरमन देता रहता है कैसे यू नीड टू फॉलो द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ऑल दीज थिंग्स। कैसे 750 से 800 लोग डूब रहे हैं, तुम्हारा यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। देयर इज नथिंग हैपनिंग। सो आई हैव रिटन अ स्कैदिंग कॉलम, आप पढ़े तो अभी 2-3। हम डालेंगे उसका अपना लिंक डालेंगे इस सेशन के बाद अपना कमेंट सेक्शन के अंदर के लोग देख सके, बट गो अहेड सर। So this is the problem, as you said, ये तो ओवरऑल यूरोपियन प्रॉब्लम है कि यूरोप में जो कुछ साल से पर्टिकुलरली फॉर द एटलीस्ट लास्ट 7-8 इयर्स जो ये छोड़ चुके हैं दिमाग से कि इनका जो इंटरनेशनल जो पहले था कि हम लोग जो प्रॉब्लम में है, लोग जो डिफिकल्टीज में, हाउ टू एटलीस्ट टू सम काइंड ऑफ डिसेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग देम, बट दैट इज नॉट हैपनिंग अभी। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये जो गवर्नमेंट्स जो है यूरोप का, अभी देखिए आप इटली चेंज किया है, आप तो फ्रांस की बात कर रहे थे, इंग्लैंड में क्या हो रहा है आपको सब पता है। तो ये जो हुआ है, ये they are so much fearful of the far right forces even in the European Parliament. मेरा एक स्टूडेंट ने अभी एक थीसिस लिखा लास्ट ईयर कि the far right जो ultra right wing forces हैं यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में, they don't have a majority but they have joined hands so well, so they are forcing the यूरोपियन पार्लियामेंट ऑल्सो टू make the rules जो आपको जो माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी को आने के लिए कैसे प्रॉब्लम होगा। So this is a fact. This is happening, and nobody can deny it. So Europe says something, and Europe does something very different on accepting the migrants or refugees what they are supposed to do, or they are committed to do as per the international law. तो एक तरफ तो यूरोपियन यानी सेंटिमेंट्स इस तरीके से चल रहे हैं और सही है। अब टर्की के अंदर भी इट्स इजी फॉर अस टू पॉइंट फिंगर्स एट यूरोप, बट टर्की के अंदर इतना एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट स्पेशली अगेंस्ट अफगान्स, पाकिस्तानीज और इराकीज और सीरियंस का तो था ही था, मगर यहाँ पे भी एक यानी उमित ओजदा करके इधर एक पॉलिटिशियन है जफर पार्टी का, और उसका कैंपेन ही इसके ऊपर है कि पाकिस्तानियों को, अफगानियों को और इन सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। और यहाँ पे जो वीडियोस वायरल हो रही हैं टर्की के अंदर प्रोफेसर अशोक, वो हो रही है कि जी अफगान रेफ्यूजीज टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस बना रहे हैं और बेसिकली खवातीन को दिखा रहे हैं बीचेस के ऊपर, या कपड़े उन्होंने कम पहने हुए हैं। उन वीडियोस को टिकटॉक और जगहों से उठा के फिर रीब्रांड किया जा रहा है टर्किश सबटाइटल्स के साथ, और फिर पोस्ट किया जा रहा है और वायरल हो रही हैं। और अपैरेंटली मेरे ख्याल से इस मौजू के ऊपर हम यहाँ से ट्रांजिशन कर सकते हैं। हमने जो बात की थी इस्लामोफोबिया फैल रहेगा यूरोप में, टर्की में, मगर 80% जो इस्लामोफोबिया ओरिजिनेट कर रहा है एज़ फार एज़ सोशल मीडिया कंटेंट, वो एक मुल्क से कर रहा है। वो उस मुल्क से आपका ताल्लुक है और मेरे ख्याल से आपकी वाबस्तगी भी है उस जगह से। तो हाँ, वो प्लीज़, तो वो तो है ही है, तो क्या करें। तो ये तो चल रहा है एंड तो कौन-सा मुल्क कौन सा पहले वो बताएँ और उसके बाद आपकी क्या वाबस्तगी है वहाँ से उसका ज़िक्र करें। आप इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में तो देखिए, जब इंडिया एक देश था जब जिस देश में पैदा हुआ था और जिस देश में मैं बढ़ा था, of course India had a problems. India had all sorts of poverty था, poverty है भी अभी। poverty जो ये था, I'm not saying India's democracy बहुत फुल प्रूफ डेमोक्रेसी था, वो भी नहीं था। इंडिया का सेकुलरिज्म फुल प्रूफ नहीं था, वो भी नहीं था। बट जो था, जितना चल रहा था और जैसे जैसे प्रोसेस में चल रहा था, देयर हैव बीन सम मिस्टेक्स, देयर हैव बीन सम टाइमली और थोड़े टाइम के लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ था, होता है, कोई पॉलिसी प्रॉब्लम था। लेकिन ओवरऑल जब हम बढ़े थे, जब व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, इट एंड व्हेन आई केम अब्रॉड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो इंडिया के लिए वी वर प्राउड दैट ये कंट्री, despite all this population poverty, itne different caste, different religion, it's different languages, it survives, it has democracy, it has a secularism, it has a scientific temper. These three things we are proud of, and this is where a country where you could stand up anywhere and you can defend your country despite all these kind of things which was you could hear. मेरे ख्याल से तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है एक पर्सपेक्टिव देना। हम बात कर रहे हैं 1.3 1.4 बिलियन लोगों की,
सही है। एक पाकिस्तानी के लिए या हम जैसे लोगों के लिए सही है, मैं एक बार इंडिया गया हूँ अपनी ज़िंदगी में 2002 के अंदर अपने वालिद और वालिदैन के साथ 2000 के अंदर मैं एक्चुअली गया था। इंडिया 2002 के अंदर नहीं। मगर हमें इतना यानी जस्ट टू इमेजिन कि ये एक मुल्क इतना बड़ा मुल्क है ये और अब इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा ज़ुबानें हैं इसके अंदर। सिर्फ़ जो मिडल क्लास है, उसकी जो बात करते हैं ना, वो है द साइज़ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 330, 340, 400 मिलियन की तो सिर्फ मिडल क्लास है। उनका एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, वो जो पाकिस्तान का मिडल या हाई एजुकेशन स्टैंडर्ड जहाँ से शुरू होता है, वहाँ से इंडिया का लो मिडल स्टैंडर्ड शुरू होता है क्योंकि उसके नंबर्स इतने हैं। हाँ, सही है पॉवर्टी वहाँ पे बहुत है, लोग आउट ऑफ स्कूल हैं, तो आप इसके ऊपर लिखते भी हैं और आपको फॉलो भी करते हैं प्रोफ़ेसर अशोक। और बहुत सारी चीज़ें गलत भी हम बताते हैं कि जी, ओ ये इंडिया के अंदर गलत है, वहाँ पे ये चीज़ हो रही है, इस्लामोफ़ोबिया, ये सब कुछ, हिंदुत्वा की हम बहुत बात करते हैं। मगर इतना प्रोग्रेस, इतना पोटेंशियल और नंबर्स के ऊपर ही उनकी जो सलाहियतें हैं, एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, दुनिया में मेरे ख़्याल से। नहीं, वो तो मतलब ये तो कोई भी आप देखिए, हम तो बहुत कुछ देखे हैं, बिकॉज मैं तो 50, आई एम नाउ ऑलमोस्ट 60, 58, 59 ईयर्स ओल्ड। तो बहुत दिन से हम, और मैं उड़ीसा से आया, जो एक छोटे गांव से बड़ा हूँ। मुझे पता है कि क्या द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब मैं गांव तो से, आप ओडिशा में आप पैदा हुए, बड़े हुए और फिर आप मेन स्ट्रीम जो हम देखते हैं, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इन जगहों से आपका ताल्लुक नहीं था। नो, मैं एक्चुअली, मेरा स्कूल था जो, मैं उसी टाइम में जो गांव का स्कूल जिसका रूफ्स नहीं होते हैं, जो 3-4 क्लास एक ही साथ में बैठते हैं, हमारा पास चेयर बेंच नहीं था, टिल क्लास 8th तक नीचे बैठ के पढ़ते थे। तो ये तो चलता है, और एंड देन ये पढ़ के तो फिर, बट देन मैं आई केम टू फॉर माय कॉलेज, स्मॉल जो लोकल सिटी, बट फॉर माय मास्टर्स आई केम टू दिल्ली। I did my MA from Delhi University, PhD from JNU. JNU का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, which that time वो तो सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना जाता था। तो अभी भी बहुत आजकल तो इसको, आजकल तो जमाना, आजकल जो रेजिम है उसको तो सोच रहा है कि एंटी नेशनल्स है, बट दैट्स समथिंग सो डिफरेंट थिंग। उसके बाद में आफ्टर पीएचडी आई केम टू स्वीडन, सो आई केम टू स्वीडन ऑलमोस्ट नाउ अर्ली 1992। सो इट्स बीन लॉन्ग टाइम। तो वो, मैं जब वो जो मैं बात कर रहा था कि वो हम, मैं तो सब लाइफ देखा हूँ, गांव का लाइफ देखा हूँ, अर्बन लाइफ देखा, अर्बन देखा हूँ। आई केम फ्रॉम ए वेरी small, lower middle class family. Then I started gradually, because my father started getting his economic situation getting bit better and better. Then I gradually able to move to the higher education. So those kind of things which happens, and we don't need to glorify it. I think 99% of South Asians all have gone through the difficulties, all have come out. So it's not like अकेला मोदी चाय बेच रहा था और प्राइम मिनिस्टर बन गया, इसे तो नहीं है। तो बहुत कुछ लोग ऐसे जो जैसे गांव से आए हैं। तो ये जो चीज है, जो इंडिया में जो चल रहा था, ऑफ कोर्स इंडिया हैज अचीव्ड अ लॉट, देयर इज नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट। देयर वाज नो आल्सो जो एप्रीहेंशन था कि इंडिया कोलैप्स कर जाएगा उसी टाइम में, 1950s 60s में। और इंडिया का द अनथिंकेबल हुआ हो गया कि इंडिया में कोई मिलिट्री रूल नहीं हो सकता है। देयर वाज इलेक्शन। कंपेयर टू पाकिस्तान यानी तसव्वुर ही नहीं कर सकते आप तो ना इंडिया के अंदर यानी मिलिट्री रूल की बात। Yes, because there when कोई सोचता है कि there have been some apprehension, राजीव गांधी के टाइम में था, some apprehension even the last मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में कि कुछ हो रहा है, but nobody took them seriously, क्योंकि ये नहीं था कि ये नहीं होने वाला है। तो ये सब, ये कैसे एक कंट्री कैसे ये अचीव कर सकता है, डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स। सो इट वाज, इट द प्रोग्रेस और द व्हाटएवर, ये जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट तो there have been quite immense if you considering all the complications. But what is राइट happening now? The problem is what has happened. You see, I let me tell you, I have been.
My research is very different. When I came to Sweden, I didn't want to be an Indian expert or South Asian expert. I have been working on the global issues, but I still always keep one research project in India, just for that I can able to visit the country, meet my family and friends, and those kind of things. So always try to keep one project there. So in that case, I have always I did a major survey in Gujarat in 90s, before Okay. Modi became the chief minister. I was there immediately after 2002 riot in Ahmedabad. I spent as a visiting professor in Baroda, which is Gujarat. There is a big university there. I spent as a visiting professor in 2005. So I have मोदी को मैं बहुत पास से देखा हूं कि मोदी का कैसे द काइंड ऑफ रूल्स कैसे करता है गुजरात से मैं फॉलो करके आया हूं तो व्हेन बाय द 2012 और 13 में जब पता चला कि लगा कि मुझे मोदी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है क्योंकि उसका जो देखिए एक अन्ना मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो एंटी करप्शन मूवमेंट इन इंडिया इन अन्ना 2011 हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे और केजरीवाल भी उसी से निकला था। वही बहुत कुछ निकले हैं वहां से तो उसी टाइम में वो जो ये सब जो ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस केम टुगेदर ऑफ कोर्स देन यू नो इट वाज एक्चुअली आरएसएस मूवमेंट तो आरएसएस का मूवमेंट था तो बट एनीवे द मूवमेंट बिकेम सच अ पावरफुल मूवमेंट देन यू रियलाइज कि ये गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट का भी कुछ प्रॉब्लम था जो कांग्रेस गवर्नमेंट के बिकॉज दे वर नॉट रियली वो तो हर कांग्रेस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम रहती है। they were acting against each other so this it's a kind of things which happened. So, but then when Modi became a prime minister, still till then I was not even writing. I was not writing on anything on India or in the newspaper, or I was even the Twitter or whatever. I was doing very. So I kept quiet for some time, but I was really angry and upset that what is happening because I knew that what के गुजरात में क्या किया था वो फिर यहाँ पे भी इंडिया में टोटल वही एक्सपेरिमेंट होगा एंड वो बंदा चेंज नहीं होने वाला है वो तो पता था मुझे तो ओ भाई वो बंदा चेंज हो ना हो मगर वो तो अपना पहुंच गया। पहले तो 2002 गुजरात राइट के बाद उसका तो दाखिला बंद था अमेरिका के अंदर, मगर अब तो वो स्टेट विजिट पे गया। उसने कांग्रेस से बात की, उसको स्टेट डिनर मिला, बाइडेन के साथ तस्वीरें उसकी हुई, तोहफे एक्सचेंज हुए। मगर एक चीज और बीच में हो गई। While this trip was going on, ओबामा साहब ने पीछे बैठ के यानी एशिया में कहीं इंटरव्यू दिया क्रिश्चियानो मानपुर को कि अगर ये चीजें चलती रही माइनॉरिटी राइट्स, मुस्लिम राइट्स के साथ रह के, तो इंडिया टूट सकता है और उसका एक बहुत बड़ा बैकलैश आया। गो अहेड प्रोफेसर। अब मुझे बताइए ये अमेरिका आपका याह्या खान को भी सपोर्ट किया था बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो तो चाइना के लिए रास्ता खोला था याह्या यस खान ने अमेरिका के लिए। तो वो याह्या खान तो उनका डार्लिंग था तो बिल्कुल। फिर वो मोदी का डार्लिंग मोदी की डार्लिंग हो गया तो क्या प्रॉब्लम क्योंकि इट्स नॉट अमेरिका गेटिंग दिस बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अमेरिकन्स हैव मगर वो तो एक याह्या खान था ना, यहाँ पे तो पूरा डायस्पोरा है भाई, इंडियन डायस्पोरा, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। वो वहाँ पे जेट इंजन बनाने की बात कर रहे हैं प्रोफेसर अशोक। ये तो वो तो कह रहे हैं कि हम जेट इंजन बनाएंगे इंडिया के अंदर, बुलवार्ट अगेंस्ट चाइना। वो ये देखिए वो चीज छोड़िए वो चीज ये जो बात करते हैं वो जो डील कर ये कैसे कैसे छोड़े, कैसे छोड़े उस चीज को? बिकॉज वी नीड टू सी द रिजल्ट टू सी द रिजल्ट क्या हो रहा है ये बात करने में ये जो डील साइन करने में ये तो सब हो जाता है बट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट व्हेनेवर यू वांट टू डू इट इन एनी कंट्री और particularly India how much really they have achieved how much make in India they have done this is something to be seen it's a 9 years he has been talking about 9 years make in India what has been happening is just buying the weapons from outside. That's the same thing. Also, I told you there are many military dictators. No, I mean, we are talking about Pakistan, but it's not that. There are many terrible dictators in all over the world. They have bought weapons from United States. They have got the red carpet welcome from the United States. So United States stamp of approval is not something doesn't make a country big, doesn't make a country a person democratic or it doesn't make a person a great leader. And the United States will flip within a 1 second if the power is lost. That we should realize that United States is not a loyal friend, never. So it's some things which they realize they don't realize this, and that's what you said. That what Obama said. What 70? How many prime minister has or leader of any country?
when they go and visit United States, 75 congressmen and senators write that the democracy and the minority rights should be, or the human rights issue should be discussed with him. How many times you have seen that the US congressmen and women have boycotted, 7 at least I have counted, boycotted Modi's speech. You bring all this Gujarati diaspora, put them in the because I was watching at the same time. I was talking to somebody, Washington Post journalist, while watching his speech in the US Congress. Congress. And the journalist is not Indian origin or something, American. So was very impressed that the Modi. I thought, I said, no, look at the where it comes, because I even didn't. I was surprised. Even the journalist thought that the U.S. congressmen and women are chanting Modi. You see? So this is where it's if that journalist can be fooled, and she is a journalist of Washington Post. So imagine what the other people are thinking. So by putting this Gujarati diaspora in this and absolutely no way how they need to behave within a Congress, when in a parliament, in a great hall of democracy in United States, you behave like as if it's a election meeting in a street corner meeting, and you are chanting this. So that doesn't make a big leader. The Americans are not stupid. The Americans are doing things for their American interest. It is for the Indians to realize how much really it is working for their interest or not. So it's a Well, the Indians are realizing, आप अपना ये बात करते हैं प्रोफेसर अशोक, मगर दूसरी तरफ से India has bought Russian oil yeah. at discounted rates. वो condemn नहीं कर रहा रशिया को यूक्रेन के अंदर, despite American pressure. तो हम जो भी बात कर लें, जैसी भी हम बात कर लें, मगर हकीकत तो ये है कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है. वो एक तरफ अमेरिका के साथ स्टेट विजिट पे मोदी जाता है, मगर दूसरी तरफ से वो रशियन ऑयल भी ले रहेगा और यूक्रेन की वॉर को भी नहीं कंडेम कर रहा. यानी 51% of all Russian oil exports went to India over the past 6-7 months. You are right, but that policy is not a new policy. It's been there. Since Non-aligned movement. Since 1947, when if you know, Nehru was a very close friend of the. I mean, Nehru was considered a communist by the Americans, but you just look at it, how he was been given respect when he goes to United States. So it's not that, because they understand, because it's not about Modi. It's because of the India's propositions in the world and India's strategic position in the Asian power context. So you need to realize that. So it's not what is happening is not new. What Modi did, I think we need to realize this. मोदी जब आने के बाद आपको फॉरेन पॉलिसी को देखना पड़ेगा. जो फॉरेन पॉलिसी क्या हुआ था, देयर वाज, आपको देखिए, कुछ आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद, एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद इंडिया ने चेंज किया है इसका जो प्रो सोवियत था. ऑफ कोर्स इट वाज नॉट अ काइंड ऑफ, इट वाज प्रो सोवियत था, देन इट बिकेम प्रो अमेरिका, and it became started pro America, but still keeping a strong relationship with Russia and also a working relationship with China. Look at these factors which has gone in. So what has happened in the last 9 years, when Modi came into power, in his obsession to become approved by the West, or particularly by the United States, he signed several deals which was actually even Manmohan Singh was opposing, like to use each other's base, military base, which was there since 2010, but he went to approve that in 2016. Manmohan Singh was not doing it. Americans can use always Indian bases to attack China if they want to. But there is a possibility that they need Indian base. But India is not going to use American bases to attack whom? Mexico or what? I mean, there is no point in that one. So he gave that one. Then if you look at the also the what is that project? The G's project, the construction project, the big one. The Chinese CPEC. Belt Road project.
One belt, one belt, one Oh, road, OBOR. that one, when everyone, even Americans went, even the Japanese went, Modi and the our what you call the Bhutan. These are the, because Bhutan didn't go because of Modi didn't. So then the only two countries didn't attend that meeting for the G's first meeting. And why you do that? What is the reason? How does that make any difference? So what he did, he was trying to to uh, go to the US till 2020, very much till 2020. Then he was decline, or his relationship was uh, getting worse with Soviets, Russia now, and he was taking a confrontational position with China. So now what happened, he realized when China Russia came together, particularly when this happened, when the in the 2020, China, Russia coming together, he has to have a certain relationship with Russia, because Russia is the only one. There are few reasons why this is important. Ki Russia, kisle. China, as a US is never trustworthy for Indian foreign policy. If there is a UN Security Resolution Council resolution on Kashmir, the only veto power which India can trust, that Is Russia. is Russia, no one else. If tomorrow China attacks India, that is before 2022 Ukraine, okay? Just think that period. If China would have attacked India, which attacked little bit, but it would have gone for a major attack. वो गलवान में हुआ था Yeah, ना, यानी it was उस a little एरिया के bit, अंदर 2020, little, 20, but I think if China go for a, मरे भी थे, पता नहीं कितने इंडियन सोल्जर्स मारे थे उन्होंने, यानी officially figure is 20 Indians and 4 Chinese, but this is what everybody counters. But don't get into this. But that was for the first time since 1962, there was a major confrontation, escalation, yeah. escalation, and it still continues. And China has controlled almost 1,500 square kilometers of that area, which used to be under India control that time. So if China would have attacked India, which country? US will not come, despite whatever the Quad and whatever. China, US hasn't come, or US will never come, because this is not the Taiwan Strait. चले हमने यानी अब एक कॉन्वर्सेशन को हम यानी लेट्स टाई इट इन टुगेदर. आपने यूएस की बात की, मोदी साहब अमेरिका पहुंचे हुए थे, साथ में खड़े हुए थे. सवाल वो इंडिया में तो लेते नहीं है, मगर उन्होंने अमेरिका में जो बाइडेन के साथ खड़े होकर सवाल लिए, सही है. Yeah. और एक सवाल उनमें से एक इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट जो चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, और उसने वहां पे अपना पूछा, सबरीना सदीकी नाम था उसका, और उसने पूछा कि जी माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर आप यानी इंडिया की बैक स्लाइडिंग कहते हैं लोग और ये वो. तो मोदी साहब ने उसके ऊपर जवाब दिया कि जी इंडिया की बड़ी अभी से नहीं है, 1000 साल से इंडिया एक सिविलाइजेशन है, और हजारों सालों से सिविलाइजेशन है, और उसका एक यानी फॉरगिवनेस और टॉलरेंस उनके अंदर बनी हुई है. यानी ये लोग जाके देख सकते हैं ऑनलाइन अगर सर्च करें. लेकिन उसके बाद एक बहुत ही ऑनलाइन कैंपेन शुरू हुई, बैकलैश शुरू हुआ अगेंस्ट दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर बराक ओबामा, हुसैन ओबामा का नाम लिया गया, बीजेपी के अपने ही कारकुनों ने, यानी लीडर्स ने, एक पूरे ट्रोल आर्मी खड़ी हो गई. इतना हुआ कि अब व्हाइट हाउस ने आके डिफेंड किया उस सबरीना सिद्दीकी को कि यार ये अपना ये सवाल पूछना हर किसी का हक है, आप इस तरीके से ट्रोल आर्मी किसी के ऊपर अनलीश नहीं कर सकते. हमने एक गुफ्तगू शुरू की थी और मेरे ख्याल से 33 मिनट हो रहे हैं, तो हम इसको जल्दी खत्म करेंगे. आप इसका लास्ट अपना जो आप आइडिया आप दें हमें, कि हमने एक गुफ्तगू शुरू की थी कुरान बर्निंग और इस्लामोफोबिया इन यूरोप से. हम इसको राउंड ऑफ करें अब. इस्लामोफोबिया, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, हिंदुस्तान, इंडिया में. गो अहेड अशोक साहब. नहीं, आप देखिए जो ये मोदी जो बोल के व्हाइट हाउस में 9 इयर्स के बाद एक बार कोई एक इंग्लैंड में एक भी कोई क्वेश्चन पूछा था जब लास्ट इंग्लैंड ट्रिप था 2016 और 15 में, एंड दिस इज द ओनली, एंड ही हैज नेवर बीन एक्सपोज टू एनी काइंड ऑफ जो
news conferences. तो वो जो question आया Sabrina Siddiqui से, it was a kind of a pull out of pull. She got this possibility to ask the question. She asked the question. She is a journalist. She asked the question which supposed to be asked, and this is rather than answering which the Modi didn't answer the question. Because Modi, you could see that Modi's face got red. Modi never has been questioned by a journalist, and that he realized that he got exposed that time. You could see that, and he didn't answer anything. And you can babble anything. I mean, it's in our DNA. I can say anything, but doesn't mean that you are answering the question. So he didn't answer the question. And the two cabinet ministers, one chief minister of Assam, went after as you have mentioned, Obama, and also all the troll army or the IT cell of BJP went after Sabrina Siddiqui and their BJP. So it shows that they are culprits. They don't have answer. They are if an Indian prime minister can answer that whether about Indian democracy and secularism, then we have a serious problem, isn't it? And because that is what has made India as India, with the democracy and secularism. If you are questioned, and because you are angry because you are asked this question rather than able to answer it, then you have a serious problem in that country. And I think it's not that I've spoken to several of the people, those who are engaged in the Washington policy making. They said, "Look, this is." I said, "How on earth you believe that he? I mean, your democracy, what kind of way it is?" He said, "Look, I mean, it's China. So this is the basic It's thing. China. China. They are कि डेमोक्रेसी या कुछ नहीं है, कि चाइना है भाई। तो, सीधी तो सीधी बात है। नहीं नहीं आप इंटरेस्ट बिफोर एनीथिंग। नहीं आप देखिए, एक फिर मैं आपको पहले याह्या खान का बताया था। आपका पाकिस्तान भी उनके दोस्त था क्योंकि अफगानिस्तान था। ओके, आप सुनिए, आप जब तक अफगानिस्तान में उनका ट्रूप्स था, तब पाकिस्तान के वो दोस्त थे। अभी चाइना के साथ उनका प्रॉब्लम है, इंडिया दोस्त है। तो इसमें कौन सा बड़ी बात है ये? तो इट्स नॉट दैट दे आर एनी वे वरीड अबाउट आपका कंट्री का डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी रहे या ना रहे, what is the why United States will take the what is it has to deal with it. It's the Indians have to Indians need to realize आपके देश को चलाने के लिए आप ही चला सकते हैं। कोई ये नहीं चला सकता है कि कोई दूसरा लोग करे। भाई यही तो कह रहे हैं, बात सुने अशोक साहब, यही तो इंडियंस कह रहे हैं। अगर आप अपना हम सही है, तरीके जो भी हों, काउ लिंचिंग अपनी जगह पे, मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद अपनी जगह पे, मगर मोदी साहब का ये कहना है कि उनके लोगों का ये कहना है कि भाई ये सिर्फ हमारा नहीं है, बीजेपी का मसला नहीं है, यही लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर भी यही नफ़रतें हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी यही नफ़रतें हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं, वो ये चाहते हैं। No, तो यही तो डेमोक्रेसी है। no, no, the democracy is not that. No, I think democracy is also if the democracy is not majoritarianism, Ali, that's the problem. That's the misinterpretation of it. There is a constitution. The constitution is as because tomorrow, if take for example, if tomorrow all the Sunnis in Pakistan will say they will kill all the Ahmadiyas, will that be something which everybody should accept? So if tomorrow all the Hindus will say we'll kill 200 million Muslims, is that the majority? Is that the democracy? There is always a constitution, the rule of law. So it is something, again, the same mistake which the Israelis are doing, because they want to change the judiciary to change the power of the judiciary, that the parliament can take the decision. No, this is the very simple mistake, but the easy mistake all these bigots do. They think that because they can hide themselves within the majoritarian viewpoint or majoritarian voting system, that they are allowed to go do whatever to infringe on somebody's human rights, infringe on somebody's life, infringe on somebody's basic. भाई यही है ना, यही चीज़ तो यही हो रही है ना, यूरोप में, No, इंडिया में, तुर्की में, हर जगह पे, यानी माइट इज़ राइट, हमारा मुल्क है, हम क्यों किसी को और को आने दें?
यानी तुम जाओ, अगर तुम अपना मुसलमान बनना है, तुम्हें बकरे काटने हैं तुमने, तो तुम हमारी कॉलोनी में नहीं काट सकते बकरा है। बकरा ईद के ऊपर कुछ ही दिन पहले वो हुआ एक सीन। तो जल्दी मुख्तसर से, यानी हम अब हल्का 40 मिनट पे आ रहे हैं और मेरे ख्याल से बट आप इसको सम अप करें ज़रा मेरे ख्याल से, नहीं, अशोक आप साहब। देखिए आपके बात में मैं सही इट्स कंप्लीट इट्स एवरीवेयर बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बात को जब आपको कुछ कौन करेगा आपका कोई जो इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री का जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वही करेंगे कि प्रोटेक्ट करेंगे जो लोग हैं सबको देखना पड़ेगा कैसे जैसे जो माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ही करेगा और वो इंस्टीट्यूशन करेंगे और इसके लिए आपका डेमोक्रेसी के लिए कौन फाइट करेगा आपके लोग करेंगे और कोई बाहर से डेमोक्रेसी नहीं आता है तो ये तो एक फाइट चलता रहेगा whether we are winning this fight or you are winning this fight that's a different matter but the fight will continue this fight is never because it's not that who is winning the fight it is that what is right and for that you have to fight In difficult times, it's very difficult to say what is right and what is wrong and what to fight for, but at least you have, very you've identified it over time, and I appreciate your time and efforts, especially joining this unknown podcast at this stage, which hopefully will get bigger. But I hope कि आगे जाके भी आप आना इसके ऊपर अपना टाइम निकालेंगे। आपने 40 मिनट निकाले हमारे लिए, बहुत आपका शुक्रिया अपना प्रोफेसर अशोक स्वेन, एंड आई नो यू डिड इट एज अ पर्सनल फेवर फॉर मी, तो मैं बड़ा it's शुक्रगुजार हूँ आपके लिए। so nice to talking to you and talking to your audience so that's great and wish you all तो the best wish all the best in this थैंक यू सर, new एंड नेक्स्ट टाइम वी वर लकी कि आप स्वीडन के अंदर भी हैं, इंडिया का भी आपके पास अपना यानी निगाह है, आपने वहाँ पे बहुत काम किया है, तो पैरेलल्स ड्रॉ करने के लिए, और स्पेशली इस वक़्त एक पाकिस्तान के अंदर राइट्स की सिचुएशन हम जानते हैं, फाइटिंग फॉर राइट्स की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो हालात, यानी लोग अपना बोलते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं, यानी जेल के बाहर कोर्ट उनको वो देता है, बरी करता है, और फिर उसके मैं बाद आगे से मैं सोच फिर रहा था कि फैमिलियों को हाउंड कर रहे हैं थोड़ा सा वो। हमको मतलब पाकिस्तान से थोड़ा सा कुछ हो पा रहा था कुछ साल पहले कुछ महीने पहले अभी तो वो भी चला गया एटलीस्ट उनको मैं उनको यानी कोई उम्मीद नहीं नहीं रही उनको यानी। मैं टीज करता था देखो पाकिस्तानी इतना अच्छे हैं तुम कैसे इतना बुरा हो सकते हो अभी कुछ वो भी नहीं बोल सकता हूँ मैं चलें, अपना ख़्याल रखें और बहुत अपना ख़्याल रखें अशोक साहब। Professor Ashok Swain joining us from Sweden and talking about the Quran burnings and as well as the situation in India under Narendra Modi and the BJP. Take care guys. अपने कमेंट्स आपने इस बार नहीं भेजे तो कोई मसला नहीं, मगर इस एपिसोड को मैं क्लिप करके I'll put it up as well. Take care. थैंक यू Thank you sir. बाय